Hello everybody, and welcome back. Sorry for the delay in voice commentary there. We were so occupied with the final that even forgot to take our lunch. So pardon me, I was taking my lunch. Field placement. We have a short third man, a point, a backward point, a cover point. Two men in the deep now are a sweeper cover and a long off. We have a mid on, short mid wicket, short square leg, and Ansar Bhai there at short fine leg. Yusuf with his next delivery. A full toss, but down the leg side. Another wide, another extra added to the total. Keeper running towards the bowler Yusuf there, having a word with Yusuf, who hasn't conceded a run off the bat so far, but he has already given 3 extras, 3 wides I mean. Yusuf with the next delivery. That's better. Oh no. Another wide, going down with the angle. Bowler Yusuf Saeed, struggling with his line there. Captain Ilahi there at mid-off. Yusuf meanwhile with the next delivery, another full toss. Ah no, fielder should have done better there. Ball is running to the square leg boundary for 4. First boundary of the inning of the bat of Vineet. In fact, it's the second boundary. There has already been a boundary of the blade of Ishwar Kumar. With that boundary, score moves to 19.
Yusuf still struggling with his line there. This was a full toss once again on the batsman's leg. In batsman placing it in the gap for 4. Man at short square leg just tried to get his foot to the ball but failed in doing so. Next ball, better line and length from Yusuf, driven down the ground towards long off. Rafi Shad long off does the fielding and returns the ball to Ilahi at mid-on. Yusuf at the next delivery. Short one, outside off, straight to the man at point. No run this time, so it's a dot. Yusuf now finding his line and length. Next to delivery. Another very good delivery. Batsman forced to defend. Another dot. Last ball of the over coming up. Yusuf to Ishwar. Ball is in the air. Oh, but shot from the man at short fine leg. Thought it was a catching opportunity, but the ball landing well short of the man at short fine leg, that is. No damage done. The Mavericks winning the toss, electing to bat first at 20 without loss from the first 4 overs. Fielding restrictions still in place. Two overs of the power play remaining. Manan to continue. Left arm around the wicket. Oh! A big heave by the batsman there, but gets no connection. Missed by the keeper, and a bye results. Score moves to 21 without loss. Manan there, bowling good line and length, of course. Not giving the batsman room. The next ball, another full delivery, handsomely driven in the gap. Ball is racing towards the cover boundary for 4. That's the second boundary of Vineet's bat. With that 4, score moves to 25 without loss. Abdul Mannan there, erring in length. Bowling it a little bit too full. Width there for the batsman, and who drives it handsomely in the gap. Next ball, shot outside off. Ball is in the air. That's a very good catch by the man at short third there. A gully, yes, and I'm unable to recollect the fielder's name. Ansari. But that's an excellent catch there. So the Mavericks lose their first wicket, and it was Wajid at gully there who took a very good catch to send Ishwar Kumar back. Ishwar, who got 8 runs with the help of 2 boundaries. And he faced 18 balls for his 8 there. So start has now gone in favor of the Avengers, because the Mavericks haven't got away with them. I mean, they haven't been scoring that fast.
They've just managed 25 from 27 deliveries, and now they have lost a wicket as well. So at the moment, the Avengers would be the happier team. New man out to the center is Aman Surana. As per the data with us, Aman has played 30 matches so far, scored 512 runs with an average of 25 and a highest score of 53. Next ball, and play and miss there by Aman. A very good first delivery to the new batsman. Right, just in that corridor of uncertainty. Batsman not sure to move forward or go back. Just flays his bat and misses it. Ball goes through to the keeper. Abdul Mannan with his next delivery to Aman. Once again a play and miss. Aman new to the crease. Feet not moving. Just hanging his bat out there, or rather going for a drive. Connects with thin air. Last ball of the over. Driven to the man at cover. There's a bowler Kareem there, who does well but can't stop the single. That's the end of the 5th over. It's 26 for the loss of 1 wicket. Yusuf Said to continue. Last over of the power play will be Aman on strike. He took a single of the last ball of the last over. Full toss in the gap. Ball is racing towards the mid-wicket boundary and crosses it for another boundary. So Aman Surana gets a gift from Yusuf and accepts it gleefully and puts the ball away for a 4. That 4 score moves to 30 for the loss of 1 wicket. Yusuf with the next ball. That's a better line and length delivery there, driven down the ground. Man at long off. That's a good throw. Rafi Shah there at long off, does the fielding, throws the ball to the keeper. Batsman have time to complete a single. The score moves to 31 for the loss of 1 wicket. Yusuf Saeed with his next delivery. Another wayward delivery there. Umpire signals wide. Another extra to the total, which moves to 32. Yusuf Saeed still struggling with his lines. Next ball. That's better. Let's it down the ground towards mid on. Bowler has missed it. That's a run out. There's don't know how to describe this wicket. Mockery of mistakes there. First, full delivery, played straight back towards mid on. There was a fielder there, now striker charging for a run, but the striker didn't leave his ground. Captain Ilahi at mid on throws the ball towards the bowler, who fails to collect it
at first attempt, but recovers well and throws the sums down to catch the batsman shot. That's the summary of that wicket. So Aman Surana run out at the non-striker end, giving way to Krishna Shakti, who's making his way out to the middle. Mavericks lose their second wicket with a score on 32. The last power play over, that is the 6th over in progress. Vineet, who opened the innings, still on crease. He's on strike, facing Yusuf Saeed. Yusuf Saeed with the next delivery. Shot, upside out, straight to the man at point. Ansar, that is. Stops, fields well and throws it back to the keeper. No run there. New batsman Krishna at the non-striker's end. Yusuf Saeed to Vineet. Good delivery. Played down the ground towards mid-off. Ilahi runs in from mid-on and does the fielding. Throws the ball to the bowler. Last ball of the over coming up. It's also the last ball of the power play. Changes in field there, just slight. Sweeper cover has moved inside the ring and there is a deep mid wicket in position now. And the other fielder outside the ring is long off. Rafi Shah, that is. I've done the pads! But umpire says not out. Keeper there asking for a review. But what I can deduce from the umpire's reaction there is that the batsman was hit outside the off stump there. As such, he is not out. For umpire to give the batsman out LBW, ball has to hit him in line with the stumps and also hitting the wicket at the same time. Change in bowling. Rafi Shah into the attack now. He'll be bowling to Vineet. With the end of that over, we have also come to the end of the power play. Mavericks have managed just 32 for the loss of 2 wickets. Captain Ilahi at long on. Rafi Shah with the first delivery, straight ball. Coming in. Batsman plays it down the ground and Rafi Shah doesn't his ball. Next ball. Shot. Midfield there. But no damage done. Batsman sticks to 1. That score moves to 34, loss of 2 wickets. And it will be the new batsman Krishna Shakti on strike, who is yet to open his account. Rafi Shah to Krishna. Defended, well defended there by Krishna, presenting the full face of the bat. Rafi Shah with his next delivery. Shot! Going for the full there, Krishna, but the ball didn't bounce as much as he expected and the ball goes for 4 byes. Keeper unable to collect the ball cleanly. 4 extras conceded.
for Suhail there. Rafi Shah with the next delivery. Tapped on the pads once again, and umpire took his time before raising the finger and gives Shakti out. Krishna Shakti confused, but I think he was out, caught in front of middle stump there. Strong appeal there by the bowler. Umpire took his time, but eventually raised the finger, sending the batsman on his way. Now Mavericks lose their third wicket for 38. It's 38 for 3 now. Krishna Shakti, the batsman, dismissed, couldn't open his account. So Krishna goes without troubling the scorers. New man in is Suhail Muhammad Khan. He'll be facing Rafi Shah, who has had an excellent start to his spell. He has only conceded a single so far, apart from the 4 byes, but the byes aren't in the bowler's figures. Rafi Shah with the last ball of his first over. To Suhail Muhammad, once again wrapped on the pad. Umpire raises his finger immediately this time, and Suhail Muhammad has to go back for a golden duck. That's excellent bowling there by Rafi Shah, doing the ball, making the ball do the talking. 2 wickets in his first over, and Hyderabad Mavericks are 4 down now. Another change in bowling. It's Wajid Khan into the attack. He'll be bowling to Vineet. New batsman into the middle at the fall of Suhail Khan's wicket is Sam. Wajid Khan bowling to Vineet. First ball. Vineet plays it back towards short cover. Wanted a single, but sent back by Sam. Rightly so. Wajid is basically a line and length bowler with military medium. This time a full toss, but the ball lands between the 2 fielders. Second run, no chance of a second there.
Mujib there at deep mid wicket, and Ilahi the captain at a straightish long on, but the ball lands between those two. So batsman still safe. Wajiduddin next delivery. A white signal by the umpire. It's way outside off stump. So another extra added to the total, which moves to 40 for the loss of 4 wickets. Okay. Wajid with the next ball. Another very good delivery. Coming in with the angle. Defensively played towards point by the batsman. The new batsman Sam. Have been just corrected by the man at long off. That Ilahi is the ex-captain. The current captain is Ansar. Next ball. Down the leg. White signal by the umpire. Another extra to the total. Wajid. Next ball. Outside off. Appeal there by the keeper. Initially, bowler wasn't interested, but reluctantly joined the keeper. So, umpire doesn't fall for it. Not out, says the umpire. Wajid Khan with the next delivery. Ball is in the air. Oh, just out of the reach of the man at short cover. Ansar, that is. Batsman going for the second. Key. Abdul Mannan doing the fielding. Till the time he returns ball to the bowler. Batsman completed 2. With that 2, score moves to 43. Wajid Khan with his next delivery. This time it's driven towards deep mid wicket. Yeah. Well done by man at deep mid wicket. Well fielded. And the single ends the over. At the end of 8 overs, score is 43, loss of 4 wickets. रफी शाह अपने दूसरे ओवर के साथ सैम स्ट्राइक पर. सैम बॉल को डिफेंड करे और वाजिद खान अभी पहला ओवर डालकर गए पॉइंट पर है, फील्डिंग किए. ओ रफी शाह को मिलने वाली ये तीसरी विकेट. सैम एक बड़ा शॉट खेलने गए इनसाइड एज, सीधे विकेटों पर बॉल जाके टकराई और ये हैदराबादी मैवरिक्स की 5वीं विकेट का पतन. स्कोर 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर. मैवरिक्स की पारी लड़खड़ाती हुई, आधी टीम आउट होकर वापस डगआउट में जा चुकी है और स्कोर बोर्ड सिर्फ 43 रन बता रहा है. सैम के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए आए हैं अलीम अमान खान. अलीम खान का जो रिकॉर्ड हमारे पास है उसके मुताबिक अलीम खान ने अब तक 10 मैचेस खेले हैं, 134 रन बनाए हैं. 22 की एवरेज औसत के साथ उनका हाईएस्ट स्कोर है 34 रन. अलीम खान 5वीं विकेट के गिरने के बाद टीम पर आए हैं, क्रीज पर आए हैं. सैम जो आउट होकर वापस गए हैं, सैम ने बनाए 3 रन
6 गेंद और सीधा बॉल। फील्डिंग टीम एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक लेते हुए। इलाही अभी भी इस टीम के कप्तान बरकरार हैं। हाव भाव से जो लगता है फील्डिंग पोजीशन, फील्ड प्लेसमेंट्स और बॉलिंग चेंजेस इलाही ही कर रहे हैं। रफी शाह, आज का दिन काफ़ी अच्छा उनके लिए। अब तक सिर्फ 8 गेंदें उन्होंने की है, लेकिन उसमें 3 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। अगली गेंद एक और अच्छी गेंद, फुल गेंद थी, एंगल के साथ अंदर आती हुई बैट्समैन ने उसे बॉलर के पास वापस खेल दिया, कोई रन नहीं। रफी शाह की अगली गेंद, ये स्लोवर वन और बैट्समैन ने शानदार शॉट लगाया गैप में। वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं था, बैट्समैन ने पूरा फायदा उठाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 4 रन के लिए। अलीम खान का लिए अच्छी शुरुआत, दूसरे ही बॉल पर उन्होंने एक चौका लगाया है। ये पहला चौका रफी शाह की बॉलिंग पर। रफी शाह थोड़ा सा भटके लाइन से, लेग स्टंप पर ये बॉल, मौका हाथ खोलने का बैट्समैन के पास, और बैट्समैन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और 4 रन बटोरे। रफी शाह की अगली गेंद, इस मर्तबा रफी शाह ने करेक्शन किया और अंसार भाई भाग कर आए कवर से, शॉर्ट कवर से, कोशिश की बॉल को रोकने की, लेकिन नाकाम रहे और बैट्समैन 1 रन लेने में कामयाब। इस 1 रन के साथ मेवरिक्स का स्कोर बढ़कर हो गया 47 रन। एक और अच्छी गेंद रफी शाह की, लेकिन फील्डिंग उतनी खास नहीं, जाने दिया बॉल को उन्होंने। आखिरी बॉल पर एक और सिंगल, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 39-49, 5 विकेट के नुकसान से 9 ओवर के बाद। रफी शाह अपना दूसरा ओवर मुकम्मल करने के बाद फील्ड से बाहर चले गए हैं। सब्स्टिट्यूट फील्डर उनकी जगह आए हैं। वाजिद खान बॉलिंग कंटिन्यू करेंगे सीधे हाथ से ओवर द विकेट। हवा में गेंद, लेकिन कोई फील्डर नहीं और बैट्समैनों के पास मौका 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ मेवरिक्स के 50 रन पूरे हुए 5 विकेट के नुकसान पर। कप्तान इलाही ने 50 रन का इस्तकबाल किया ताली बजाकर। वाजिद खान की अगली गेंद, अच्छी और अच्छी गेंद, बैट्समैन अलीम खान ने इसे वापस खेल दिया बॉलर की डायरेक्शन में। गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्डिंग की और वापस अप टेरर अप पर। वाजिद खान की अगली गेंद अक्रॉस द लाइन, इस मर्तबा अलीम खान ने खेला, फील्डर मौजूद है वहां पे डीप स्क्वायर लेग पर, फील्ड की और गेंद को वापस फेंक दिया विकेट कीपर सुहेल के पास। 1 रन और मेवरिक्स के खाते में। वाजिद की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फुल सीधा हाथ में ड्राइव, शॉर्ट कवर के फील्डर ने इस बार मौका नहीं दिया बैट्समैनों को रन भागने का और स्कोर 51 for 5 पर रुका हुआ। वाजिद की अगली गेंद, ये थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी, अच्छी चेंज ऑफ पेस, बैट्समैन बीट हो गए चेंज ऑफ पेस में, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ने अंदरूनी किनारा लिया और शॉट फाइन लेग के फील्डर के पास गई।
जब तक के शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर इस बॉल को रोकते और कीपर के पास लौटाते, बैट्समैनों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के साथ मेवरिक्स का स्कोर बढ़कर हो गया 52। हाँ, अलीम खान इस गेंद को जाने दिया कीपर के पास। ओवर की आखिरी गेंद थी ये। इसके साथ 10वां ओवर का इख्तिताम। 10 ओवर के इख्तिताम पर मेवरिक्स का स्कोर है 52 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और ये जो इस वक्त मैच की सूरत हाल है, इससे हैदराबादी एवेंजर्स ज़्यादा मुतमईन और ज़्यादा खुश होंगे बनिस्बत हैदराबाद मेवरिक्स के, क्योंकि मेवरिक्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था और अब तक उनका फैसला गलत साबित होता हुआ, क्योंकि उन्होंने 5 विकेटें अब तक गंवा दी है और कोई खातिरखा रन्स नहीं बनाए हैं। 10 ओवर में 52 रन। मौजूदा जो रन रेट है वो सिर्फ 5.2 का है। और अगर इसी औसत से, इसी रफ्तार से रन बनाते रहे मेवरिक्स, तो मुश्किल 100 के पार जा पाएंगे। तो बैट्समैनों को कुछ रफ्तार रनों की बढ़ानी होगी। 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स का वक्फा होता है। तो जब तक के बैट्समैन ड्रिंक्स लेते हैं, हम भी कुछ थोड़ा सा आराम करेंगे। लौटेंगे ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। विकेट कीपर सोहेल ने अपने आप को विकेट कीपर की जिम्मेदारियों से आज़ाद किया और दस्ताने और विकेट कीपिंग के जो पैड्स हैं वो अंसार भाई को सौंप दिए हैं। अब विकेट कीपिंग करेंगे अंसार और सोहेल स्लिप में है। बॉलिंग के लिए आए हैं गौस मोहिउद्दीन, जो कि इस मर्तबा अराउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। बैट्समैन विनीत, जिन्होंने इस पारी का, इस इनिंग्स का आगाज़ किया था, अभी तक क्रीज पर डटे हुए हैं। 20 गेंदों का सामना किया है, 14 रन बनाए हैं। अब तक सिर्फ 1 चौका उन्होंने लगाया है। गौस मोहिउद्दीन तीसरे ओवर की पहली गेंद के साथ राइट आर्म अराउंड द विकेट। पहली गेंद बैट्समैन ने इसे खेला स्क्वायर लेग की जानिब। शॉर्ट स्क्वायर लेग से फील्डर आए, बॉल को फील्ड किया और रन बनाने का कोई मौका नहीं। बैट्समैन थोड़ा सा एहतियात से खेलते हुए रिस्की रन्स के लिए भाग नहीं रहे हैं। गौस मोहिउद्दीन की अगली गेंद और ये बैट्समैन बीट हो गए। अच्छी गेंद पढ़कर अंदर आई। बैट्समैन सिर्फ इसे गाइड करना चाहते थे 1 रन के लिए, लेकिन बीट हो गए। बैट्समैन को मुहतात रहना होगा, क्योंकि वहाँ पे स्लिप में सुहेल तैनात हैं, जो कि एक अच्छे फील्डर हैं, और थर्ड मैन पर वाजिद भी मौजूद हैं। तो बहुत ही ये रिस्की स्ट्रोक था। अगली गेंद पैड्स पर, बॉलर की एक ज़बरदस्त अपील, लेकिन एम्पायर ने नकारा।
क्योंकि अराउंड द विकेट जब बॉलर आता है अक्सर बॉल लेग स्टंप के बाहर पिच करती है, तो इसे LBW देना बड़ा अंपायर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। 3 गेंदें डालने के बाद गौस मोहिउद्दीन ने एंगल चेंज करने का इरादा किया है और अब ओवर द विकेट डालेंगे। एक और अपी प्ले एंड मिस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। इस ओवर में अब तक बैट्समैन एट सी हैं, यानी बॉल और बैट का कोई ताल्लुक इस ओवर में नहीं हुआ है, अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ है बैट का बॉल से। गौस मोहिउद्दीन की अगली गेंद इस ओवर की 5वीं, लाइन से थोड़ा सा भटके इस मरतबा गौस भाई, और ये एक वाइड लेग स्टंप के बाहर। इस वाइड के साथ मैवरिक्स के खाते में एक और एक्स्ट्रा का इजाफा। स्कोर बढ़कर हो गया 53 रन। 5 विकेट के नुकसान, 5 विकेटों का नुकसान बर्दाश्त कर चुकी है मैवरिक्स की टीम पहले 10 ओवर में। देखना है आइंदा अगले 10 ओवर में क्या कर पाते हैं। गौस की अगली गेंद, ये एक और एक्स्ट्रा गेंद लेग स्टंप के बाहर, फिर से एम्पायर का वाइड का इशारा, एक और एक्स्ट्रा। मैवरिक्स का स्कोर बढ़कर हो गया 54 रन, 54 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। गौस मोहिउद्दीन अगली गेंद, इस मर्तबा बेहतर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बैट्समैन ने से खेला सीधे थर्ड मैन की तरफ। 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 55। गौस मोहिउद्दीन अपनी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे अलीम अमान खान, जिन्होंने 6 रन बनाए हैं, 6 गेंदों का सामना किया है। ये बॉल, गुड चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की ये गेंद पैड्स पर लगी, लेकिन एम्पायर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई इस अपील में। डॉट बॉल के साथ ओवर का इख्तिताम। इस ओवर से आए 3 रन। मैवरिक्स का स्कोर बढ़कर हो गया 55, 5 विकेट के नुकसान पर। ये बॉल धीमी गति की भी थी और शायद एक ऑफ कटर डाली थी गौस ने, तो बॉल जिस तरह एक ऑफ स्पिनर की बॉल स्पिन होकर अंदर आती है, ये बॉल भी उसी तरह अंदर आई, तो शायद ये लेग स्टंप को मिस करती, इसीलिए अंपायर ने बैट्समैन को नॉट आउट करार दिया। अगला ओवर, पहली गेंद लेग स्टंप का बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। यूसुफ सईद आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। यूसुफ सईद अपने पहले 2 ओवर्स में 16 रन खर्च कर चुके हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा जो अंदाज़ा है, इन 16 में से शायद 8 रन वाइड के होंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा अब तक एक्स्ट्रास दे चुके हैं यूसुफ सईद। अगली गेंद, ये अच्छी गेंद, गुड लेंथ और मिडिल स्टंप पर आती हुई, ये ऑफ स्टंप के बाहर पिच की हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर स्वीपर कवर द्वारा। बॉल सोहेल की अच्छी बैकिंग, क्योंकि बॉलर ने ये बॉल जाने दी थी। यूसुफ सईद की अगली गेंद, और एक बेटर गेंद, अपील हल्की सी लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर का फैसला नॉट आउट। अंपायर बिल्कुल अनमूव्ड। हवा में गेंद, लेकिन कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं। हाँ ठीक है, और 2 रन अलीम खान के खाते में।
टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी इस शॉट पर, तो बॉल तेज़ी से नहीं गई। मौका था डीप के फील्डर के पास, उन्होंने बॉल को रोका बाउंड्री के पार जाने से और सिर्फ 2 रन तक महदूद रखा बैट्समैन को। यूसुफ की अगली गेंद, एक और बड़ा शॉट, इस मर्तबा बेहतरीन टाइमिंग और ये 6 रन। अलीम अमान खान मैवरिक्स के लिए बल्ले से अपने जौहर दिखाते हुए, ये बहुत ही लंबा छक्का था मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। बॉल शायद खो गई है, फील्डर तलाश करते हुए। नको कहते फिर भी ले लेके जाओ। यूसुफ सईद की अगली गेंद, एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश वहां पर अलीम अमान खान की। ये समझ नहीं आया किस तरह की कोशिश थी, क्योंकि जो शॉट कवर के फील्डर है बॉल से बहुत दूर थे। आखिरी वक्त पर उन्होंने सिर्फ अपने हाथ आगे कर दिए, बॉल हाथों में चिटकी नहीं बल्कि निकल गई, तो एक और ड्रॉप कैच लेना चाहिए था ये शॉट कवर के फील्डर को। अगली गेंद छल के हाथों से खेला, फिर से शॉट कवर के हाथों में और 1 रन। इस 1 रन के साथ 12वां ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक और महंगा ओवर यूसुफ सईद का, इस ओवर से आए 12 रन और मैवरिक्स का स्कोर बढ़कर हो गया 67 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। वाजिद खान अपना स्पेल जारी रखेंगे। वाजिद खान की एनालिसिस, 2 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं। वाजिद खान तीसरे ओवर की पहली गेंद के साथ शॉट बाहर और सम के पॉइंट के फील्डर के हाथों से निकल गई गेंद, लेकिन कोई नुकसान नहीं क्योंकि बैट्समैन 1 रन कंप्लीट कर चुके थे। सिंगल पहले बॉल से। वाजिद खान इस मरतबा अराउंड द विकेट डालेंगे अलीम खान को, और ये थोड़ी सी दिशाहीन भटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। अगली गेंद, एक और बड़ा शॉट अलीम खान के बल्ले से और एक और छक्का। शायद गेंद ने पहले बाउंड्री लाइन से पहले एक टप्पा खाया था, इसलिए अंपायर का इशारा 4 रन। वाजिद खान की अगली गेंद, एक बार फिर से अच्छा शॉट अलीम खान का, फील्डर स्वीपर कवर दौड़ कर आए, गेंद को रोका और बॉलर को वापस कर दिया।
ओवर थ्रोस ले सकते थे लेकिन मना किया अलीम अमान खान। इस 1 रन के साथ पहुंचे 20 रन पर सिर्फ 13 गेंदों में, 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से। अगली गेंद वाजिद खान की, अच्छी गेंद, बैट्समैन ने इसे ड्राइव किया, शॉर्ट कवर के फील्डर ने इसे रोका लॉन्ग ऑफ की तरफ जाने से और बैट्समैनों को बाज रखा रन लेने से। एक और बढ़िया गेंद, फिर से कवर रीजन में खेलकर एक और सिंगल बैट्समैनों ने चुरा लिया। वाजिद खान अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर आए हैं, सामना करेंगे अलीम खान। ये स्लोअर गेंद और एक रनआउट का मौका, लेकिन नहीं, बैट्समैन पहुंच चुके थे। सिंगल के साथ ओवर खत्म। 13 ओवर के अख्तिताम पर मेवरिक्स पहुंचे 76 रन पर 5 विकेटों के नुकसान के साथ। अलीम अमान खान जब से क्रीज पर आए हैं और रनों की रफ्तार बढ़ गई है, अब आसानी से रन आते हुए मेवरिक्स के लिए। इन दोनों बैट्समैनों के बीच 33 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है सिर्फ 28 गेंदों में। यूसुफ सईद अपना स्पेल जारी रखेंगे। ये उनके स्पेल का आखिरी ओवर, यानी उनके कोटे का आखिरी ओवर। यूसुफ सईद अपने चौथे ओवर के साथ, पहली गेंद हवा में और दोनों डीप के फील्डर्स के बीच, एक टप्पे पर बाहर। अंपायर का इशारा, 4 रन। अलीम खान बेहतरीन पारी खेलते हुए मेवरिक्स के लिए, चौके के साथ मेवरिक्स का स्कोर बढ़कर हो गया 80 रन, 80 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। यूसुफ सईद की अगली गेंद, एक फुल टॉस, लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है जहां पे इलाही मौजूद हैं। थोड़ी सी हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन गेंद बिल्कुल उनकी नज़रों के नीचे थी, तो ओवर थ्रोस या एक्स्ट्रास का कोई मौका नहीं। 1 रन से इत्मीनान करना होगा अलीम खान को। यूसुफ सईद की अगली गेंद, ये बेहतर गेंद, बैट्समैन विनीत ने इसे वापस खेल दिया बॉलर के पास। फॉलो थ्रू में यूसुफ ने इसे फील्ड किया, एक डॉट बॉल। यूसुफ की अगली गेंद, हवा में बॉल, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास हो, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने कैच की कोशिश भी नहीं की, वहां पर बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए इस कैच को और गेंद को गिरने दिया। गेंद ने सेफ लैंडिंग की और एक और रन बैट्समैन के खाते में। विनीत पहुंचे 20 पर। यूसुफ की अगली गेंद, ये बेहतरीन गेंद और बैट्समैन अलीम खान ने इसे इज्जत बख्शी और डिफेंड किया बॉलर की जानिब। बॉलर ने फील्ड किया और अपने रनअप पर वापस। यूसुफ की अगली गेंद, ये बॉल फिर से हवा में, लेकिन बॉलर यूसुफ की पहुंच के बाहर। बहुत ही बढ़िया पेस चेंज किया यूसुफ सईद ने वहां पर और एक और डॉट बॉल के साथ ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा। 14 ओवर 82 रन्स,
5 विकेट के नुकसान और रनों की रफ्तार में हल्का सा इजाफा। मेवरिक्स अब तकरीबन 6 की औसत से रन बनाते हुए रनों की रफ्तार में जो इजाफा हुआ है ये अलीम अमान ख़ान की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 26 रन बनाए हैं 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से, और विनीत ने उनका भरपूर साथ दिया है। ये पार्टनरशिप बढ़कर 39 रन हो गई है सिर्फ 34 गेंदों में। वाजिद खान अपना स्पेल जारी रखेंगे, थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली करते हुए। अब 4 फील्डर हैं लेग स्टंप पे, लेकिन विनीत 6 रन विनीत के बल्ले से, ये पहला छक्का विनीत का। आप फुल टॉस डालेंगे तो आप बाउंड्री पे 6 फील्डर भी रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैट्समैन ने बॉल को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है 6 रन के लिए। क्या 9 फील्डर भी अगर इस गेंद के लिए बाउंड्री लाइन पर होते फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती, क्योंकि ये एक फुल टॉस थी। इस छक्के के साथ विनीत पहुंचे 26 रन पर और मेवरिक्स पहुंचे 88। इस इनिंग्स में पहली बार मेवरिक्स का रन रेट 6 के ऊपर हुआ है। और ये वाजिद खान थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए, क्योंकि बैट्समैन अब अपने शॉट के लिए जा रहे हैं और रन आज़ादी से बना रही है हवा में गेंद, लेकिन एक बार फिर से बैट बॉलर को चकमा देकर निकल गई गेंद। बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर चकमा खा गए। धीमी गति की गेंद थी, लेकिन अगली बेयर ऑफ पैड्स पर एम्पायर का इशारा, आउट। अलीम खान बहुत ही बढ़िया पारी खेल कर वापस जाते हुए अलीम खान आउट हुए 26 रन बनाकर सिर्फ 19 गेंदों में, और इस तरह मैवरिक्स की 6ठी विकेट गिर गई है। मैवरिक्स अब तक 6 विकेटों का नुकसान बर्दाश्त कर चुकी है और 90 रन बनाए हैं। ये इनिंग्स का 15वां ओवर है। वाजिद को मिलने वाली ये पहली विकेट। वाजिद खान जिन्होंने अब तक बढ़िया गेंदबाजी की है, 25 रन दिए हैं और 1 विकेट। अलीम खान की बहुत ही अहम विकेट हासिल करते हुए वाजिद खान। अलीम खान के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए आए हैं हर्ष कुमार। हर्ष कुमार सामना करेंगे वाजिद खान का, जिनकी अभी ये उनके स्पेल का चौथा और आखिरी ओवर है। इस ओवर की 3 गेंदें बाकी है। तीन बॉल। वाजिद खान बॉलिंग करेंगे हर्ष कुमार को, जो कि अभी अभी क्रीज पर आए हैं। हर्ष कुमार, वाजिद खान की ये गेंद थोड़ी सी ओवर पिच थी, जिसे हर्ष ने ऑन द राइज ड्राइव किया। मिस फील्ड वाजिद खान के द्वारा अपने फॉलो थ्रू में, और 1 रन। ये अगली गेंद हल्की सी धीमी गति की गेंद, बल्कि
पॉइंट के फील्डर ने फील्ड किया और बैट्समैनों ने एक और रन मुकम्मल किया। स्कोर पहुंचा 92। वाजिद खान अपने कोटे की आखिरी गेंद के साथ, ओ ये बहुत ही कमजोर गेंद और ये 4 एक्स्ट्रास और अंपायर का इशारा वाइड। तो मैवरिक्स के खाते में 5 बोनस रन्स, इनका स्कोर बढ़कर हो गया 97। 6 विकेट के नुकसान पर वाजिद खान दोबारा आखिरी गेंद के साथ इस ओवर की बैट्समैन बीट हो गए। बॉल गई कीपर के दस्तानों में और एक और डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ वाजिद खान के चौथे ओवर का इख्तिताम और मैवरिक्स पहुंचे 97 पर। 15 ओवर के ख़त्म पर 97, 6 विकेट के नुकसान पर। Change in bowling as Rafi Shah is back into the attack. Rafi Shah, the most successful bowler so far, bowled 2 overs, conceded just 7 runs and picked up 3 crucial wickets. He'll be bowling to Vineet, who is on 28 of 35. Rafi Shah, first ball, worked in the gap there. Batsman looking for second, decide against it. A single to start Rafi Shah's third over. Rafi Shah with his next delivery to Harish. Full delivery on the batsman's pads or legs there. Driven towards long on. Another single. Takes the score to 99. Rafi Shah to Vineet. Shot. Ball is in the air and it's 1 bounce 4 over mid wicket. Deep mid wicket, that is. That's the 100 up for Mavericks in the 16th over for the loss of 6 wickets. Mavericks have picked up the scoring rate. Although they have lost the wicket of Aleem Aman Khan, but Vineet is continuing. Vineet is continuing to play his shots. Next ball, good cricket there by Vineet. Hit a boundary of the last ball. Next ball, drives it towards short cover and gets off strike. Sensible cricket there from Vineet, who has moved to 34 now of just 38 deliveries. And Mavericks total moves to 104. Rafi Shah with the next delivery, another expansive drive by the new man Harsh there. Inside edges it towards short fine leg. Another single. Eight runs so far from this over. Rafi Shah, the last ball of the over. The slower one was batsman Vineet was through his shot early and just gets a bottom edge to that. Dot ball to end the over and score remains on 105 for the loss of 6 wickets. Four overs remaining. Abdul Manan, the opening bowler, back into the attack. He'll be bowling left arm over to Harsh Kumar.
on the offside and one on the on. Fine leg there, who is a little bit squarer. Change in field now. Man at short third has come back to third man. Oh, Mannan there starts with a short and wide delivery, which is put in the gap by Harsh Kumar for a couple. Yeah, Harsh moves to 5 with that couple, and Mavericks another short delivery, another cut. Once again in the gap. Man at deep point there does the fielding and throws it back to the keeper. Not the right length, Abdul Manan. Not hitting the right length in this over. First 2 balls have been on the shorter side. Next ball around the wicket. Yeah, that's better length there. Gets a hand to the ball in his follow through and stops the batsman from going for a single. An important dot there. Manan with his next delivery. Once again around the wicket. Outside edge there. Oh no, misfield the bat by the man at short third there. Wajid is after the ball and it doesn't stop it. Ball crosses the boundary for another 4. Poor fielding by the 2 men there in the point region. First, the man at short third lets it through his legs. Then Wajid chasing the ball lets it go to the boundary. Though he had reached the ball there. That 4 takes Vinith to 38. Oh, wayward delivery there by Manan and white signal by the umpire. Score moves to 130. Abdul Manan with his next delivery. That's another wide. Outside offs this time. Mavericks have recovered well. At one point, it appeared as if Mavericks would hardly reach 100, but they have already crossed the 110 mark there. Score now is 113 for the loss of 6 wickets. Abdul Manan with the last ball of this over, the 17th of the innings. Yeah, another good shot there. Another single. Score moves to 114. $115 for 6 wickets. Last 3 overs remaining. You can hear voices from the dugout. The Mavericks dugout urging the batsmen to go for some big hits. Current run rate, the projected score is 135. And I think Mavericks will better that. Was Moyuddin with his 4th over. Ball is in the air once again, but again lands safely. Another single to Vinny, who moves to 40.
Osmoyuddin with his next ball. Another full delivery. Driven down, but bowler gets hit his foot down in time to stop the ball and prevent the batsman from going for a run. Osmoyuddin with the next delivery. Shot! Batsman going for the cut. Misses it. Ball goes through to the keeper who rolls it back to the bowler. Just a single of the first three deliveries of the all-important 18th over. Osmoyuddin with the next delivery. This time batsman goes across the line. Gets an inside edge onto his pad and the ball rolls to the keeper, who is quickly onto the ball and stops the batsman from going for any run. Another dot. Score remains on 116. Osmoyuddin with his next delivery to Harsh Kumar. On the pads this time. Single taken by batsman Harsh Kumar, working it towards the man at short square leg and taking a single, giving it a strike to Vineet. Vineet, who has been there for a very long time now. He opened the innings actually. Last ball of the over. Ball is in the air once again, but straight to the man at long on, who does the fielding and returns the ball to the bowler. Umpire says over, and 1 run it will be. Oh, it's 118 for 6 now. Last 2 overs remaining. Rafi Shah it will be to bowl the fourth over of his 19th over of the inning. Rafi Shah to bowl out. His first ball, use of the feet by Vineet, and it's a 6. 4-4. Once again, umpire signals a 4. Might have just bounced in front of the rope there. A boundary to start the 19th over. Rafi Shah with his next delivery. Use of the feet once again. Ball is in the air towards mid wicket. Batsman coming back for the second. Good throw there from the deep, but good running by the batsman enables them to complete 2. Score moves to 124. Vineet within touching distance of his half century. On to 47 now. Next ball, played down the ground towards long on. Will they risk the second this time? No. Just a single. That takes Vineet to 48. And the Mavericks move to 125. Next ball on the pads. Opportunity to get some runs there, but Harsh Kumar, I think, has missed out. Cups it on his pads and takes a leg by, which gets Vineet back on strike. Vineet was on 48 of 48 deliveries with 4 fours and a 6. Use of the feet once again by Vineet. Bowler trying to run batsman down, concedes an overthrow, and that's the 50 for Vineet. 50 of 49 deliveries. Batsman, camera is here, buddy. Thank you. 50 for Vineet.
Rafisha with the next delivery. In the air towards long on once again. Fielded on the bounce by the fielder at long on. And another single to end the over. 11 runs of that over, which takes the Mavericks total to 129 for the loss of 6 wickets. Last over coming up. To be bowled by Mannan, Abdul Mannan that is. He'll be bowling left arm round the wicket. Vineet on strike. How many more can Vineet get from this last over? Vineet, who has opened the inning, he looks exhausted. Tired a bit. Wasn't looking at the actually there. The batsman had to bow out and start again. First ball of the 20th over. Swing and a miss there by Vineet. A dot to start the 20th over. Abdul Mannan, short ball on the batsman body, tucked him up, and the batsman Vineet plays it back to the bowler. Another dot. Mannan with the third delivery of the over. Bowled! Vineet has finally been dismissed in the last over of the inning. After playing a couple of dots, he is bowled. So the Mavericks lose their 7th wicket in the 20th over. Mavericks dugout welcoming Vineet there. It's Vineet whose 50 has given some respectability to this score. I mean the Mavericks score, which is up to 129 now. Shoaib is out to the middle to face the last 3 deliveries. How many more can the Mavericks get out of these 3 deliveries? Coming around the wicket this time. Left arm around to the new batsman Shoaib. Ball is in the air, straight to the man at short cover. A misfield there. The batsmen are coming back for the second, and it will be a run out. Yeah. Harsh Kumar sacrificing his wicket there for the team's cause, going for the second run. One more added to the total, which moves to 130, and Mavericks losing their 8th wicket. Vineet run out for it's Harsh Kumar run out for 7 of 11 deliveries. Shoaib will be on strike because the batsman had gone for 2, and there was a run out at the non-striker's end. New man in is Anurag Singh, who will be at the non-striker's end. Mannan to bowl, 5th delivery of the over, and it's bowled. Shoaib, the batsman, dismissed there. 9th wicket down for Mavericks. Scores still on 130.
Calling the knock. It's a team hat trick actually, because first Vineet was bowled. Next ball, Harsh Kumar was run out. In this ball, Shoaib once again bowled by Abdul Manan. So a team hat trick there for the Avengers. 3 wickets of 3 balls. Can he make it a double hat trick? Can Manan get another wicket of the last ball and affect a all out? No. Ball goes through his legs. In fact, 2 byes there conceded of the last ball. Wicketkeeper Ansar trying to run the batsman out, concedes an overthrow. So with those two, Mavericks end up at 132 for the loss of 9 wickets. The target for the Avengers will be 133 from their quota of 20 overs. We will be back with the chase in 5 minutes from now. See you then.
Welcome back, guys. We are a few seconds away from live action. Yeah, the Hyderabadi Avengers all set to get their chase underway. They have a target of 133. Two openers for the Avengers, Sayyid Ilahi and Sheikh Dunaid. Aman Surana to open the bowling for Mavericks. First ball, appeal for a kite behind. Turned down by the umpire. A short ball to start. Outside off. Batsman Ilahi going for the cut. Misses it. Ball goes through to the keeper. Aman with the next ball. A short ball again. Outside off. A swing and a miss. Here. Ilahi. Way away from the ball there. There was daylight between the ball and bat. Aman with the next ball once again. It's a very short ball and way outside off stump. White signal by the umpire. Avengers open their account with an extra. Aman Surana with the next delivery. Once again, wide outside off, played back to the bowler, who fields it in his follow through. Field setting, slip in place, deep third man point, a sweeper, short cover, mid off, mid on, short mid wicket, and short square leg. Another short delivery, this time played towards the man at mid off. Still no single. So no runs of the bat as of now. 4 dots and a wide. Aman Surana with the 5th ball of the innings. Another wild swing there by Ilahi. No contact between the bat and the ball. And the ball goes through to the keeper. 5th dot of the over. Last ball coming up. Aman Surana to Ilahi. Another swing and a miss. That's an excellent over to start by Aman Surana. Just a single, that too of the wide. And just yet to score a run off the bat. Ilahi swinging his bat there, swinging for heavens, but connecting with thin air. Muhammad Kaleem it will be to share the new ball with Aman. First ball, Payanam is there. And I think that is exactly why we have a slip in place there. Ball going past the outside edge. Kaleem with the next delivery. Full toss, driven in the gap. There is protection there in the deep. Slight misfield, and that's enough for the batsman to come back for the second. A full toss there, driven by the batsman Junaid in the gap. 2 runs taken. So Aman just moved to 3 without loss. Kaleem with the next delivery. That's a full toss on the pads this time, straight to the man at short mid wicket, who was on the edge there inside the 30-yard circle. The batsman once again take a single and an easy one. Score moves to 4 without loss. Ilahi on strike now, facing Muhammad Kaleem for the first time. Short outside off. Ilahi goes for the cut.
and misses. Ball goes through to the keeper, who passes it to the slip fielder, returns it to the bowler. Muhammad Kaleem with the next delivery to Ilahi. Ball was in the air but just out of the reach of the man at mid-off, and ball has gone past the boundary now. First boundary of the inning of the bat of Ilahi. And the score moves to 8 runs. Ilahi has been looking for this shot right from the beginning and connects this time. Last ball of the over. Once again, ball is in the air. Short mid-wicket fielder getting underneath it, but it spills it. That's a chance gone down. Batsman coming back for a second. Throw from the fielder there, but keeper doesn't collect it. 2 runs completed. That's the end of the over. It's 10 without loss after 2 overs. That should have been a wicket. Instead, it's 2 more runs to Ilahi, who moves to 6 of 9 deliveries. Oh, it was Aman there, the fielder at short mid-wicket, who spilled that chance. Can he make up for it in this over? Aman Surana to continue. Right arm over the wicket. Junaid on strike. Oh no. Batsman going across the line and missing the ball. Aman with his next delivery. Use of the feet there by the batsman Junaid. Both the batsman and the keeper beaten, and the ball goes to fine leg boundary for 4 more. 4 extras to Avengers. Score moves to 14. Poor keeping effort there by the keeper, who lets the ball go through and concedes 4 byes. Mavericks don't have too many in the bank, so they can't afford to give these extras. All the feeders, including the keeper, need to tighten up. Aman with the next ball, shot outside off, cut behind point, man there on the boundary, a deep point. In fact, it's the third man fielder there, who's a little bit squarer, who does the fielding and keeps the batsman to 1. Next ball, Ilahi once again swings and finds short cover this time. Score 15 without loss. Aman with the 5th ball of the 3rd over, bowling to Ilahi. Shot outside off, ball is in the air, but this time it's above the head of the mid-off fielder. Fielder from mid-on cuts it off, and poor running there by the batsman. Should have been at least 2 there, if not 3. Don't have any explanation for that lack of application from the batsman. Very casual, very casual there. At least should have been at least 2, if not 3. Next ball, it's full tails, driven straight to the man at short cover. Junaid there. End of the over. A dot to finish. 6 runs from that over. Score is 16 without loss, and at the end of 3 overs.
Kalim to continue. Change in field. There's a long on in place now. Aman, who bowled the last over, is at short mid wicket. Waiting for the 9th striker to get ready. He has some problems with his bat. Is he biting his bat? Umpire Sajjad Hashmi there. Just checking on the bat. Everything good to go now. Kalim to continue bowling right arm over. Ilahi to face. First ball of the 4th over. In the gap, ball is racing towards the deep square leg boundary and crosses the boundary rope for 4. Second boundary for Ilahi, who moves to 11 of 12 deliveries. Avengers score up to 20. Good placement there by Ilahi. Not so good by the bowler. Bowling on the batsman's pads there. You can't bowl to the batsman on their pads actually. We Indians are very good of our pads. Anything on pads goes for a boundary. Ilahi once again. Going too hard at the ball. It was in the air but just short of the man at mid-off. Kalim with his next delivery. Third ball of the over. Ilahi this time goes. That's another 4. That's a handsome drive. An on drive by Ilahi towards deep mid wicket. Nobody there in the deep. Ball goes past the boundary line for another 4. Second boundary of the over. His score moves to 24 without loss. A good start by Avengers to the chase. Solid start. 24 on board without loss. Another field change. This man at deep wicket boundary now. Dilai with legs ball. At this time, Dilai goes over cover. Ball goes past the boundary line. Another 4. Third boundary of the over. Kalim once again providing batsman with wit. Batsman seizes the opportunity and lofts it over cover for another 4. Ilahi moves to 19. Last ball. Oh, that's another short delivery. Once again in the gap, and that's the 4th boundary of the over. Hat-trick. Towards deep square leg. It's a hat-trick of 4. 16 runs already from this over with a ball still to come. Ilahi moves to 23 and Avengers move to 32. Poor bowling there from Kalim. Bowling both sides of the wicket. Last ball up. Once again, Ilahi goes through with his shot. This time doesn't have power. Ball goes to the man at long on. Just a single. 17 runs of that over. So Avengers now up to 33 without loss. Current run rate is 8.25. So only 100 more runs required of remaining 16 overs. That is 96 balls, 100 runs. Change in bowling.
New bowler is he comes round the wicket. Full toss on the legs. Helped along for another 4. So the last 4 scoring shots have all been boundaries for Ilahi. Suhail Khan there with that gift. A full toss on Ilahi's legs. Helped over fine leg or a square leg for another 4. Once again, poor start there by Suhail Muhammad Khan, who has switched to over the wicket now. Next delivery, shot! Oh, ball once again bouncing a little extra from this end, but the batsman Ilahi adjusts well and defends the ball towards point. So will be the next ball. Another short one outside off stump. Ilahi this time plays it towards long off, takes a single to get off strike, which means Junaid will be on strike facing Suhail Muhammad Khan for the first time. Another change in fielding. Long off has been called inside the circle and long on sent back. Next ball, good delivery. Batsman plays it back to the bowler. A dot ball. That's better from Suhail. Next delivery. Outside off. Room for the batsman. Drives it. Managed shot cover. Harsh Kumar does well. And stops batsman from going for the run. Suhail Khan once again. Bails have come off once again because of the wind. Suhail Khan to Junaid, who uses his feet this time. Suhail shortens his length, but Junaid pulls it to the man at short mid wicket there. Another dot to end the over, just 5 runs from that over. It's 38 without loss. बॉलर कहाँ कोने में Another bowling change. Win it into the attack. Bowling right arm over to Ilahi. Shot outside off. Ilahi once again goes for the cut, but misses. Ball goes through the keeper. A dot to start the 6th over. This is the last over of the power play, where the field restrictions are still in place. Field restrictions will be relaxed after this over. Munith with the second ball of the over. Another short one and board. Ilahi once again swinging for the heavens. Ball was short. Batsman targeting the stumps. And once the batsman missed the ball, it hits the stumps. Ilahi making his way back after a well-made 29 of just 21 deliveries. A good start by the Avengers. They've just lost their first wicket.
New man in is Muhammad Mujib. He has come to the center. The fall of Ilahi's wicket. Ilahi, who made a quick fire 29 of just 20 deliveries. Oh, misfield there by the man at mid-on. So batsman safely make it to his crease. Another single added to the score. Avengers moved to 40 for the loss of 1 wicket. 39, sorry. 39 for 1. Vineet with his next delivery. Ball is in the air. Can the fielder make it this time? No. Bowler, oh, good running there. Batsman coming back for the second and completes it easily. No overthrows there. 2 fielders backing the throw. Ball was in the air for a long time, but none of the fielders, neither the mid-on nor the short mid-wicket fielder, could make it to the ball, which falls in no man's land. Vineet with his next delivery. 5th ball of the over. Right arm over to Sheikh Junaid. Another full delivery on the pads and to his stumps. I think Junaid, if he had not taken that ball onto his pads, he would have been safe, but the ball goes on to the stumps of Junaid's pads and bolts him. The Avengers lose their second wicket for 41. Win it with the last ball of his over to the new batsman. Another very good delivery, but played with caution there. Defended back to the bowler. End of a successful over from Vineet. 2 wickets in that over. That of Junaid and Ilahi. So both the Avengers openers back in the hut. Score remains 41 for the loss of 2 wickets. New man in is Suhail Siddiqui. That over also marks the end of the power play. Sohail Khan to continue. Batsman makes it into a full toss, but hits it straight to the man at short mid wicket, which is Ali Muhammad Khan, who played a good innings earlier in the day. In the first inning, the Mavericks innings, got 20 odd quickly, got the Mavericks back on track. Had a good partnership going with Vineet. Sohail with the next ball, another full toss, but hit straight to the short wicket fielder again. Next ball, this is protection there, just a single. Thought ball was going towards the square leg boundary.
But there's a man there at square leg boundary now, so just a single for Mujib there. New batsman Suhail Siddiqui on strike. Ball is in the air but well wide of the man at short cover. A single to open the count for Suhail Siddiqui. Score moves to 43. Sohail Khan with the next. Another full toss this time. Oh no. Third full toss which Mohammad Mujib has missed and hit it straight to the man at short at mid wicket. Sohail with the last ball of the over and bowled! Bowled through his legs there. What have you done, Mujib? Walked across the stumps and let the ball go through. Bowled round his legs there. Avengers lose the third wicket, that of Mujib. Mujib just managed 2 runs of the 6 deliveries he faced. Third wicket down for the Avengers. Next man in is Ansar Khan, a wicket keeper. New batsman Ansar Khan, who has another good record, impressive record. 109 matches, more than 1400 runs, with the highest score of 78. The Avengers need him badly. He needs to get some runs. We need to continue. We need with 2 wickets in his first over. He'll be bowling to Suhail Siddiqui. First ball of Vineet, second over. Driven back to the bowler, who fields it in his follow through. No run taken. Score remains on 43 with the loss of 3 wickets. We have Bob with us here at long on. Hey Bob, how are you doing? Your team in strong position, huh? Enjoying? Vineet with the next delivery. Played in the gap there by Suhail. Misfield by the man at point, and the batsman come back for a comfortable 2. Fielders Aman at point there. Aman Surana who let the ball through, conceding an extra. With that 2, score moves to 45. Vineet to Suhail. Another drive there by Suhail between the man at point and short cover. Another single taken by Suhail. Suhail Siddiqui, the batsman. Ansar Khan on strike for the first time. He came in at the fall of Mujib's wicket. He needs to Ansar. Football of the over. Us another good delivery. Almost a yorker there. Ansar does well to keep it out. Score 46 for the loss of 3 wickets. Vineet at the next delivery. Oh, wavered there from Vineet. Bowling it down the leg side and conceding an extra. White signal by the umpire. Score moves to 47. Vineet with the last ball of his second over. Bowling to Ansar.
Ansar goes for the pull. It was a little short, but hits it to the man at long on, who does the fielding and returns the ball to the bowler. With that single, the over comes to an end. The score moves to 48 for the loss of 3 wickets. In fact, there is still ball remaining in the over. We need this time. Whoa! That's a big wicket. Sohail losing his off stump there. Third wicket for Vineet. With the score at 48. Fourth wicket of the Avengers down. It's a big wicket of Sohail Siddiqui out, bowled by Vineet for just 4 runs of 6 deliveries. Avengers in trouble. Lost their 4 wickets for just 48. That's the end of 8 overs. मोहम्मद खान अपना स्पेल जारी रखते हुए बॉलिंग करेंगे अंसार खान को। अंसार खान जो कि अभी नए हैं क्रीज पर, सिर्फ 2 गेंदें खेली हैं, 1 रन बनाया है। सोहेल खान की पहली गेंद, एक फुल टॉस। अंसार ने सीधे शॉट थर्ड मैन के हाथों में गेंद को सिर्फ गाइड किया था अंसार खान ने। शॉट थर्ड मैन के फील्डर ने मिसफील्ड की और बैट्समैनों को मौका दिया 1 रन लेने का। 1 रन के साथ स्कोर एवेंजर्स का बढ़कर हो गया 49, 39, 4 विकेट के नुकसान। नए बैट्समैन जो कि क्रीज पर आए हैं सोहेल सिद्दीकी के विकेट के गिरने पर, वो हैं नबील खान। नबील खान अब सामना करेंगे सोहेल खान का। सोहेल मोहम्मद खान बॉलर, नबील खान बैट्समैन। सोहेल की ये गेंद, कदमों का अच्छा इस्तेमाल लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग फील्डर के पास। बैट्समैनों के पास 1 रन का मौका। इस 1 रन के साथ एवेंजर्स के 50 रन पूरे। बॉब, एवेंजर्स के लिए थालियां प्लीज। थैंक यू। एवेंजर्स के 50 रन पूरे। एक और फुल टॉस, नोब का इशारा लेग एम्पायर का। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 5 एक्स्ट्रा रन्स एवेंजर्स के लिए। एवेंजर्स के खाते में 5 बोनस रन्स। एवेंजर्स का स्कोर बढ़कर हो गया 55, 5 विकेट के नुकसान पर। ये बहुत ही खराब गेंद थी सोहेल मोहम्मद खान की, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये फ्री हिट, लेकिन फ्री हिट पर कुछ खास नहीं कर पाए अंसार खान। बल्ला तो घुमाया था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई राब्ता नहीं हुआ। कीपर ने भी गेंद को मिस किया और बैट्समैनों के पास मौका एक बाई दौड़ने का। स्कोर बढ़कर हो गया 56। एक फिर से कदमों का इस्तेमाल, हवा में बॉल। नो, हर्ष कुमार जो कि शॉट कवर पर थे, इस कैच को गिरा दिया।
मेवरिक्स के फील्डर्स अपने बॉलर्स का साथ नहीं निभा रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है ये तीसरी कैच या ये शायद चौथी कैच है जो फील्डर्स ने गिरा दी है। अंसार फुल टॉस बनाकर इसे ड्राइव किया, मिड ऑफ का फील्डर दौड़कर, कलीम मिड ऑफ से दौड़कर गए, वाइड मिड ऑफ की तरफ फील्ड किया। करेक्शन, लॉन्ग ऑफ के फील्डर कलीम दौड़कर गए, फील्ड किया, गेंद को वापस किया बॉलर को, 1 रन। और कदमों का फिर से इस्तेमाल, इस मरतबा इनसाइड एज, डीप स्क्वायर लेग फील्डर के पास। एक और रन का इजाफा मेवरिक्स के खाते में, एवेंजर्स के खाते में। स्कोर एवेंजर्स का बढ़कर हो गया 59, 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से आए 11 रन, 9 ओवर के ख़त्म पर स्कोर 59 रन, 4 विकेट। एवेंजर्स को मजीद 74 रन्स दरकार हैं 66 यानी 66 बॉलों में। बॉलिंग में तब्दीली, अमन सुराना आए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर, इस इनिंग्स का ये 10वां ओवर। शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, बैकफुट पर गए बैट्समैन नबील और इसे प्लेस किया शॉर्ट कवर और पॉइंट के फील्डर्स के बीच में और 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर बढ़कर हो गया 60। ये अगली गेंद फिर से शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने के लिए गए बैट्समैन अंसार, लेकिन बीट हो गए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अमन सुराना की अगली गेंद, सामना करेंगे अंसार, ये ओवर पिच गेंद, इसे फिर से खेल दिया गैप में और 1 रन ले लिया। पॉइंट के फील्डर दौड़ कर आए, डायरेक्ट थ्रो मारना चाहते थे क्योंकि अंसार खान थोड़े से स्लो थे, लेकिन बॉलर ने थ्रो को रोक लिया, वरना शायद ओवर थ्रोज होती। अगली गेंद कदमों का फिर से इस्तेमाल और इस मरतबा बीट हो गए बैट्समैन नबील। एक डॉट बॉल। अमन सुराना की अगली गेंद, हवा में गेंद, लेकिन वहां डीप मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी नहीं है और ये मिसफील्ड बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन नबील खान के लिए। मिसफील्ड ये महंगी साबित होती हुई, 2 की जगह 4 रन मिले बैट्समैन नबील खान को, जिनका इनफरादी स्कोर बढ़कर हो गया 8 रन और एवेंजर्स का स्कोर बढ़कर 65 रन। एवेंजर्स को मजीद 68 रन की दरकार। आखिरी गेंद इस ओवर की, फिर से नबील ने बल्ला घुमाया और गेंद गई सीधे शॉर्ट मिड विकेट के हाथों में। अंसार खान अपनी क्रीज से हिले भी नहीं और नबील भागकर अंसार के साथ खड़े हो गए। मिड विकेट के फील्डर ने कीपर को थ्रो किया, जिन्होंने बेल गिल्लियां उड़ा दी और इस तरह नबील खान रन आउट हो गए। हैदराबादी एवेंजर्स को 5वीं विकेट का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और इसके साथ 10 ओवर्स भी मुकम्मल हो गए। अब वक्त है एक छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक का।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 10 ओवर के बाद मैंडेटरी एंड चेंज। दूसरे एंड से बॉलिंग का स्पेल जारी रखेंगे विनीत, जिन्होंने अब तक 2 ओवर्स में 8 रन खर्च किए और 3 विकेट्स लिए हैं। विनीत बॉलिंग करेंगे अंसार को। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर एक रनआउट की शक्ल में विकेट गिरी थी, इसलिए नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर। गौस मोहिउद्दीन वैसे बोलते विनीत, अगली बॉल लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर में एक और एक्स्ट्रा का इजाफा। एवेंजर्स का स्कोर बढ़कर हो गया 66, 5 विकेट के नुकसान। विनीत अच्छा स्पेल करते हुए अपनी अगली गेंद के साथ बॉलिंग करेंगे अंसार को। शॉर्ट गेंद, बैट्समैन को 2 हाफ में कट कर दिया इस गेंद ने, और बैट और पैड के बीच से निकलकर कीपर के दस्तानों में गई ये गेंद। बेहतरीन गेंदबाजी विनीत की, वाकई बैट्समैन दबाव महसूस करते हुए प्रेशर में है। ये अच्छी शॉट अंसार की, लेकिन इम्पैक्ट का असर महसूस करते हुए अंसार खान अपने हाथ को झटकते हुए शायद थोड़ा सा शॉक होने लगा। काफ़ी तेज़ गेंद थी ये। नए बैट्समैन गौस मोहिउद्दीन पहली मर्तबा स्ट्राइक पर सामना करेंगे विनीत का, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। विनीत की अगली गेंद, गौस मोहिउद्दीन आखिरी वक्त पर बल्ला अड़ाया और इनसाइड एज लेकर गेंद गई स्क्वायर लेग की तरफ। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर स्क्वायर लेग पर आकर फील्डिंग की और बैट्समैनों को 1 रन तक महदूद रखा। विनीत की अगली गेंद, सामना करेंगे अंसार। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बहुत ही तेज गेंद पैड्स पर लगी अंसार खान के। एम्पायर का इशारा लेग बाई। उस लेग बाई के साथ एवेंजर्स का स्कोर बढ़कर 69, 5 विकेट के नुकसान। विनीत के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से सीधे शॉट कवर के हाथ में। हर्ष कुमार दौड़ कर आए, थ्रो करना चाहते थे लेकिन अपने आप को रोका क्योंकि बैट्समैनों ने रन मुकम्मल कर लिया था। इस 1 रन के साथ ओवर ख़त्म। 11 ओवर के अख्तिताम पर एवेंजर्स का स्कोर 70 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं अलीम अमान खान। अलीम खान ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे गौस मोहिउद्दीन को। अलीम अमान खान जिन्होंने अपने पहले ओवर में 6 रन दिए थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद, शॉट ऑफ स्टंप के बाहर। गौस मोहिउद्दीन इसे सिर्फ गाइड करना चाहते थे क्योंकि शॉट थर्ड मैन बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं है, लेकिन बीट हो गए। अलीम की दूसरी गेंद, फिर से शॉट और इनसाइड एज सीधे पिच पर।
खुशकिस्मत रहे गौस मोयुद्दीन की गेंद उनके स्टंप्स पर वापस नहीं आई। ये दूसरी डॉट इस ओवर की। अंसार खान गौस मोयुद्दीन को कुछ मशवरा सलाह देते हुए। अलीम खान की अगली गेंद, फिर से शॉट, पॉइंट फील्ड के हाथ में सीधा। उस पॉइंट फील्डर ने थ्रो किया बॉलर के पास, बॉलर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए और एक ओवर थ्रो। जहां पर 1 रन होना चाहिए था, फील्डर ने ओवर थ्रो करके 2 दे दिए हैं। अलीम खान की अगली गेंद, एक और बढ़िया गेंद बैट्समैन के पैड्स पर। गौस मोयुद्दीन दूसरे रन के लिए आते हुए आसानी से मुकम्मल कर लिया। अंपायर लेग बाई का इशारा करते हुए, लेग बाई के लिए लेग बिफोर की अपील की थी बॉलर ने, लेकिन बॉल आसानी से लेग स्टंप को छोड़ती हुई जाती। नॉट आउट का इशारा अंपायर का। अगली गेंद हवा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर। इस मर्तबा सिर्फ 1 रन। अच्छी फील्डिंग सुहेल मोहम्मद खान की। पॉइंट के फील्डर कैच के लिए गए थे, बॉल उनके हाथ में आई नहीं, लेकिन सुहेल मोहम्मद खान ने उन्हें अच्छा बैक किया और बैट्समैनों को 1 रन तक महदूद रखा। अलीम मोहम्मद खान की अगली गेंद, शॉट ऑफ स्टंप के बाहर और ये पॉइंट और शॉट थर्डमैन फील्डर के बीच। अंसार खान दूसरे रन के लिए वापस आते हुए आसानी से मुकम्मल कर लिया। इस 2 रन के साथ ओवर खत्म। 12वें ओवर से आए 7 रन। एवेंजर्स पहुंचे 77 5 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर्स बचे हैं और एवेंजर्स को चाहिए 56 रन। 8 ओवर्स यानी 48 गेंदे, 56 रन। मैच अभी भी बराबरी पर है। ज़्यादा रन्स एवेंजर्स को नहीं चाहिए, लेकिन उनके पास विकेट्स भी ज़्यादा नहीं बची हैं, सिर्फ 5 विकेट्स, जिनमें से अक्सर अब मैं समझता हूँ बॉलर्स होंगे या ऑलराउंडर्स। तो जो दरकार 56 रन है, उसमें से ज़्यादा रन इन 2 बैट्समैनों को बनाने होंगे। अंसार खान और गौस मोहिउद्दीन को जिम्मेदारी उठानी होगी और अपनी टीम को जो 134 का 133 का जो निशाना है, उससे जितना हो सके करीब ले जाना होगा। विनीत बॉलिंग करेंगे। विनीत अपने चौथे ओवर के साथ। पहली गेंद फिर से बीट हो गए बैट्समैन गौस मोहिउद्दीन। एक गौस मोहिउद्दीन स्मार्ट शॉट खेलने की कोशिश, बॉल को सिर्फ गाइड करना चाहते थे, लेकिन बीट हो गए। विनीत की अगली गेंद, सामने गौस मोहिउद्दीन, ये थोड़ी सी भटकी हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर। बॉलर और कीपर दोनों ने अपील की कॉट बिहाइंड के लिए। कोशिश थी एम्पायर को डिस्ट्रैक्ट करने की, एम्पायर की तवज्जो हटाने की, लेकिन एम्पायर सतर्क, होशियार और वाइड का इशारा करता है। विनीत की अगली गेंद और एक और मर्तबा
बीट हो गए गौस मोहिउद्दीन। शायद ये बॉल थोड़ी सी नीचे रह गई बैट्समैन के इशारों से। ऐसा लगता है कि ये गेंद ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा ही सही शायद नीचे रह गई। विनीत अपनी अगली गेंद के साथ, इस ओवर की तीसरी गेंद। एक मरतबा फिर से अपील बॉलर और कीपर दोनों की, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। आवाज आई जरूर थी लेकिन ये हाँ शायद बॉल बैट्समैन के पैड्स को छूती हुई गई, इसीलिए वो आवाज आई थी। विनीत की अगली गेंद मोहिउद्दीन बॉयर्स में फिर से बीट हो गए। इस मर्तबा थोड़ी सी ऊपर की थी विनीत ने गेंद। मोहिउद्दीन इस मर्तबा ड्राइव के लिए गए ना कि कट के लिए, लेकिन फिर से बीट हो गए। 3 छोटी गेंदें शॉर्ट गेंदें की थी विनीत ने। चौथी गेंद थोड़ी सी ऊपर फेंकी, बैट्समैन को दावत दी, बैट्समैन ड्राइव के लिए गए लेकिन खुशकिस्मत रहे कि एज नहीं। बेहतरीन कोशिश बॉलर की अपने फॉलो थ्रू में कॉटन बोल्ड करने की। ये मुश्किल मौका था, ऐसे गेंदें अक्सर हाथों में चिटक जाती है लेकिन इस मर्तबा नहीं। बहुत ही तेज शॉट था ये गौस मोहिउद्दीन का, तो विनीत शायद दर्द महसूस करते हुए और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए विनीत, हालांकि सुहेल मोहम्मद खान स्प्रे लेकर आ रहे थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो शायद पहले अपना ओवर मुकम्मल करना चाहते हैं, उसके बाद जाकर कुछ मेडिकल अटेंशन देंगे अपने हाथ को। विनीत की ये आखिरी गेंद इस ओवर की, फुल टॉस। अंसार खान ने इसे ड्राइव कर दिया है, कवर शॉर्ट कवर फील्डर के ऊपर से गेंद निकल गई और बाउंड्री लाइन के पार। पहला चौका अंसार खान के बल्ले से। इस चौके के साथ एवेंजर्स का स्कोर बढ़कर हो गया 83, 5 विकेट के नुकसान पर। और विनीत के आखिरी ओवर से आए 6 रन और इस ओवर के इख्तिताम के साथ विनीत ने अपने कोटे के 4 ओवर्स कर लिए हैं, 18 रन खर्च किए और 3 विकेट उनके खाते में। ये विनीत की बॉलिंग एनालिसिस। अब मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। पहले इनिंग में हालांकि काफ़ी धूप थी, वक्त भी काफ़ी हो चला है। अब मैं समझता हूँ रोशनी बहुत ही जल्दी से फेड होगी, तो एम्पायर्स को थोड़ा सा जल्दी कराना होगा। अलीम मोहम्मद खान अपना बॉलिंग स्पेल जारी रखेंगे। अलीम का ये तीसरा ओवर इस इनिंग का 14वां ओवर। 14 ओवर की पहली गेंद, एक अच्छी ऑन ड्राइव गौस के बल्ले से सीधे लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में। 1 रन। 1 रन के साथ एवेंजर्स का स्कोर बढ़कर हो गया 84। गौस मोहिउद्दीन पहुंचे 7 पर 13 गेंदों के साथ, 13 गेंदें खेलने के बाद। अगली बॉल शॉट हफ्तम के बाहर, एक और अच्छी शॉट अंसार के एक बल्ले से और एक और चौका। अंसार खान अब उनकी निगाहें जम चुकी हैं
गेंद उन्हें फुटबॉल, शायद फुटबॉल की तरह नज़र आ रही है, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि फील्डर्स कहाँ कहाँ पर हैं, और फील्डर्स के पास नहीं बल्कि गैप्स में अब शॉट्स लगा रहे हैं अंसार खान। 2 चौके पिछली 2 गेंदों पर, पिछली 2 गेंदों का जो अंसार खान ने सामना किया है, 2 चौके लगाए हैं। अलीम खान, अंसार फिर से हवा में गेंद, लेकिन नहीं पहुंची लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास। कलीम, जिन्होंने बॉलिंग का आगाज किया था, लॉन्ग ऑफ पर तैनात हैं, उन्होंने बॉल तक पहुंचने की कोशिश भी शायद नहीं की। इस वक्त गिर जाती है तो एवेंजर्स की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अलीम खान की अगली गेंद, गौस मोहिउद्दीन ने इसे डिफेंड किया, गेंद गई शॉट मिड विकेट की तरफ। मिड ऑन से फील्डर आए, गेंद को उठाया और वापस की बॉलर को। बैट्समैनों के पास मौका एक और रन लेने का। अलीम की अगली गेंद इनसाइड एज, बाउंड्री लाइन, शॉट फाइन लेग की तरफ, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई। फील्डर वहां पर हैं, फील्डर ने चुस्ती का मुजाहरा किया, फौरन बॉल वापस की विकेट कीपर को। बैट्समैनों को केवल सिर्फ 1 रन लेने का मौका। अगली गेंद अलीम खान की, अपील और एलबीडब्ल्यू। एम्पायर जवाद हाशमी ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। बैट्समैन गौस मोहिउद्दीन इस फैसले से कुछ खास खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। उनके हिसाब से ये बॉल लेग स्टंप को छोड़ कर जा रही थी, लेकिन एम्पायर द मैन हू मैटर्स। वापस जाते हुए गौस मोहिउद्दीन ने बनाए 8 रन, 15 गेंदों का सामना किया। उनकी जगह लेने के लिए आए हैं रफ़ी शाह, जो खुद भी काफ़ी एक्सपीरियंस तजुर्बेकार है। 200 से ज़ायद मैचेस खेल चुके हैं, तकरीबन 1200 रन इन्होंने बनाए हैं। इनका अपना इनफरादी जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 52 रन 52। तो ये भी बैट के साथ काफ़ी सलाहियत रखते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है नो मग विद बैट, तो रफ़ी शाह भी रन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। रफ़ी शाह को अंसार खान का साथ देना होगा अगर एवेंजर्स को जीतना है। अभी भी एवेंजर्स को 42 रन बनाने हैं 36 गेंदों में। इस दौरान सुहेल मोहम्मद खान ने अपने चौथे ओवर का आगाज़ किया है। पहली गेंद को अंसार ने बॉलर सुहेल की जानिब ड्राइव किया, बॉलर ने फील्ड किया और रन बनाने की कोई भी कोशिश को नाकाम कर दिया। अगली गेंद शॉट ऑफ स्टंप के बाहर और बेहतरीन कट अंसार की, वहां पर पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के बीच में गई ये गेंद। पॉइंट के फील्डर ने बॉल के पीछे दौड़ लगाई, रेस हुई बॉल और फील्डर के बीच, और फील्डर जीत तो गए लेकिन वो बॉल से आगे चले गए। बॉल हालांकि पीछे रह गई लेकिन बाउंड्री की जो रोप है उसको बॉल ने क्रॉस कर दिया। ये अगली गेंद, अच्छी गेंद,
थोड़ी सी नीचे रही ये गेंद और बैट्समैन अंसार खान बीट हो गए। कीपर ने बॉल को कलेक्ट किया और रोल किया बॉलर सुहेल की जानिब। वो अगली गेंद अपील लेग बिट 4 की, लेकिन अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। रफी शाह जो कि अभी अभी क्रीज पर आए हैं, चुस्ती का मुजाहरा किया और लेग बाय कंप्लीट कर लिया। सुहेल खान अपने चौथे ओवर की आखिरी गेंद के साथ रफी शाह को हवा में गेंद सीधे मिड विकेट के फील्डर के हाथों में। मिड विकेट के फील्डर अलीम खान की मिस फील्ड। बैट्समैनों के पास मौका एक और रन लेने का। एक और बॉल इस ओवर में बाकी है। आखिरी गेंद फुल टॉस सीधे हाथ में, शायद नहीं, गैप में। रफी शाह दूसरे रन के लिए आते हुए और बेहतरीन रनिंग द बिटवीन द विकेट्स बैट्समैन की। एक और ओवर थ्रो हो सकता था, लेकिन रफी शाह शायद क्रैम्प्स आ गए हैं उनकी पैरों में, तो तीसरा रन नहीं भागे रफी शाह। सुहेल खान का ओवर खत्म। महंगा ओवर। इस ओवर से आए 8 रन और एवेंजर्स का स्कोर बढ़कर हो गया 99। 6 विकेट के नुकसान पर एवेंजर्स को चाहिए एक और रन अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। विनीत और सुहेल मोहम्मद खान दोनों ने अपने कोटे के 4 ओवर मुकम्मल कर लिए हैं। सुहेल ने अपने 4 ओवर में 24 रन खर्च किए और 1 विकेट ली, जबकि विनीत के खाते में आए 3 विकेट। उन्होंने खर्च किए सिर्फ 18 रन। एक फोर्स बॉलिंग चेंज। हाँ, अमन सुराना बॉलिंग के लिए आए हैं, जिन्होंने मेवरिक्स के लिए बॉलिंग का आगाज किया था। ओपन की थी बॉलिंग कलीम के साथ। अमन सुराना अब बॉलिंग करेंगे रफी शाह को। रफी शाह जो कि नए हैं क्रीज पर, अभी अभी आए हैं। पहले बॉल को ड्राइव किया शॉर्ट कवर के फील्डर की तरफ और आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। शॉर्ट कवर के जो फील्डर है बिल्कुल 30 यार्ड सर्कल के एज पर ठहरे हैं, बिल्कुल ऑन द रिंग आप कह सकते हैं। ए यॉर्कर, बेहतरीन बॉल अमन सुराना की। बीट हो गए अंसार खान जो कि काफ़ी सेट है। 22 बॉलों में 27 रन बना चुके हैं, लेकिन ये गेंद इतनी बढ़िया थी कि एक सेट बैट्समैन को भी बीट कर गई। अमन की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ही ज़्यादा शॉट, बैकफुट पर गए अंसार और इसे कट किया डीप पॉइंट फील्डर के पास। एक और रन एवेंजर्स के खाते में। एवेंजर्स की सेंचुरी मुकम्मल। एवेंजर्स का स्कोर 101 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 2 सिंगल्स इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर। अमन की बॉल की चौथी गेंद, आगे बढ़े रफी शाह, ये गेंद गैप में गई है और फिर से एक और मिसफील्ड सुहेल मोहम्मद खान की। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद। अंपायर का इशारा 4 रन। विकेट कीपर नाखुश इस फील्डिंग एफर्ट से सुहेल की, अपने गुस्से का इजहार करते हुए। और रन्स जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती है इस समय, इस वक्त, और इस तरह मिसफील्ड और करके तोहफे में रन्स नहीं दी जा सकती। एक और बेहतरीन शॉट रफी शाह की, बॉल फिर से गैप में और एक और चौका। 2 गेंदे 2 चौके रफी शाह।
अमन सुराना का ये ओवर महंगा साबित होता हुआ। एवेंजर्स का स्कोर बढ़कर हो गया 109 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं अमन सुराना। सामने है रफी शाह का एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर से गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। ये चौकों की हैट्रिक रफी शाह के बल्ले से। इस ओवर से आए 14 रन। एवेंजर्स का स्कोर बढ़कर हुआ 113। अब एवेंजर्स को सिर्फ 20 रन और चाहिए, 20 रन दरकार। 4 ओवर्स बाकी हैं, यानी 24 गेंदें 20 रन। अगला ओवर करने के लिए आए हैं अलीम खान ने अब तक 3 ओवर किए हैं, 19 रन खर्च किए और 1 विकेट उनको मिला है। अलीम खान भी अपने कोटे का चौथा ओवर बोल आउट करेंगे। अलीम खान की ये गेंद अंसार खान बीट हो गए। अपील विकेट कीपर की, लेकिन अंपायर का इशारा ना, हर चीज के लिए अपील करते हुए पर चेंज इन वॉइस। Our English commentator taking over. Alim Khan with his next delivery. Shot outside off. No. It's on the top of off. The ball has bowled Ansar Khan there. Bails have come off as the 7th wicket down for the Avengers. Good bowling there by Alim Khan. He has removed the shed Ansar Khan there, who had 28 to his credit of just 26 deliveries. So a very important wicket there for Alim Khan. Avengers into trouble once again. While Ansar Khan was on the crease, they were cruising along. But the wicket of Ansar has put the Hyderabadi Avengers boat into troubled waters once again. New batsman in is Yusuf Saeed, who is also a very handy bat. Let's see what he can do. Avengers still need 20 runs from remaining 22 deliveries. Yusuf Saeed taking a leg stump card, I think. Alim Khan to Yusuf Saeed with his next delivery. Shot outside off. Yusuf goes for the cut and misses. Is beaten. Ball goes through to the keeper. Third dot of the over. Alim Khan with the next ball. Yusuf makes it into a full stop. Full toss, drives it straight to the man at short cover, who misfields once again and allows the batsman a single. Mavericks need to buckle up and help along. There's a man at deep fine leg boundary there who does the fielding and restricts the batsman to a single. A bad ball there from Alim, but got away with it because there was protection in the deep mid fine leg boundary there. Alim Khan with the last ball of the over. Oh, through the batsman's defences, but misses the stumps. Alim Khan can't believe his luck there. A dot ball to end the over. Just 2 runs of that over and the all-important wicket of Ansar Khan. Alim Muhammad Khan getting the Mavericks right back into the game. Evenly poised. The Avengers need 18 runs of the remaining 80 deliveries
whereas the Mavericks need 3 wickets. Can the Avengers get the 18 required, or will it be the Mavericks who can cause an upset, getting the remaining 3 wickets? Kaleem back into the attack. It's Kaleem who opened the bowling for the Mavericks. He will be bowling the 18th over of the innings. Rafi Shah on strike. There were only 3 fielders inside the ring. The wicketkeeper has called the man at deep fan leg boundary inside the ring. First ball. It's a wide down the leg. Wrong line there by Kaleem. Mavericks can't afford to give those extras because the Avengers only need 18 runs now. With that wide, the requirement comes down to 17. Use of the feet there. That's an excellent shot. Oh, overrun there by the man at deep cover. Sweeper cover fielder overruns the ball, misjudges it, and allows the ball to go to the boundary. 4 signal by the umpire. Rafi Shah playing a gem there. 19 from just 7 deliveries so far. Kaleem with his next delivery. Use of the feet once again. Ball is in the gap once again. Rafi Shah running hard but not supported by Yusuf Saeed there. Should have been 2. Yusuf Saeed should have gone for the second. But he prefers to take the strike. Wrapped on the pads. Appeal by the fielder and short third and the keeper. Not out says the umpire, and the batsman run for a leg bye. That's another very good shot in the gap as well, and the bowler lets it, and the fielder Sohail Mohammad Khan once again lets it through. Ball crosses the boundary. It's another 4 for Rafi Shah. Oh, a very expensive over so far from Kaleem. 2 boundaries so far in this over, and 2 balls still to be bowled. Next ball. Use of the seat once again by Rafi Shah. Straight to the man at short square leg there, who throws it to the keeper, but by that time batsman had already completed the single. Our requirement comes further down to just 6 runs of 13 balls. Last ball of the over, it's another wide. Another poor delivery by Kaleem there. Kaleem with the next delivery. Oh, appeal, and it's been given out. Cut behind. Yusuf Saeed. 8th wicket down for the Avengers. Still need 5 runs.
Wicket of the last ball of the over for Khalim. Yusuf Said dismissed for 6. Abdul Mannan has walked out to the centre. 5 more runs required by the Avengers. 2 overs remaining. Aman Surana to continue his 4th over. Rafi Shah there, use of his feet, plays it towards long off and takes a single. Brings Mannan on strike, Abdul Mannan on strike. We are into the tail now. Can Aman Surana clean the tail up? Mavericks just need 2 wickets. Next delivery, shot outside off, cut towards point. There is no one at point there. There is a deep point in position though. Single taken by Abdul Mannan. Gets Rafi Shah back on strike. Rafi Shah playing gem of an innings here. Taking Avengers home. Just 3 more runs required. Next delivery. Makes it into a full stop and drives it in the cover. Ball is going past the cover boundary for 4. That's the end of the match. Rafi Shah with a gem. Hyderabadi and Avengers have won the match by 2 wickets. And the man of the match, it's Rafi Shah for his all-round performance with the ball as well as the bat. First, with the ball in hand, Rafi Shah bowled his 4 overs for just 25 runs and picked up 3 crucial wickets. And then, with the bat in hand, he cut 29 of just 12 deliveries with 6 boundaries. So, with that, we come to the end of the day. That's it from us for today. See you next week.